हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत आम साइंस किचन को। फ्रेंड्स मुझे कंचा कदली गोटे आइटम कर देखी मुझे 3टी कंचा कदली नहीं। फ्रेंड्स देखो ये मुझे भल भाव धोई गोटे गोटे गड़ कर काटी नहीं, दुईटी पीस कर देछि। आपको चोपा लगी आम आपको सिझे ना प्रेशर कुकर में। बेसी सिझेबानी, मात्र गोटे बा 2टी सीटी सिझेबे। तापर आम यार चोपा काढ़ा। फास्ट आम आपको चलतु सिझे ना। फ्रेंड्स देखु कदली गुड़िक सिझी जाए। यार चोपा गुड़िक सावधान से काढ़ी ना, आपको पीस पीस कर काटी ना। फ्रेंड्स देखो मैं आपको काटी नहीं पीस पीस करी। एवं आम बेसन, हल्दी, शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च गुंड, लुण, हल्दी दी सेटार गोटे पेस्ट हम। ये या गोले छाणी ना। चलतु फ्रेंड्स देखु मुझे गोटे डंकी बेसन नहीं, किछि लाल लंका गुंड, शिमला मिर्च जस्ट लाल हल्दी गुंड, स्वाद अनुसार लुण, किछि जीरा गुंड, अल्प और करी पाउडर आपको गोले गोले पानी दी पेस्ट कर नवा। कदली को पकई ना। फ्रेंड्स देखो मुझे ऑलरेडी ये तेल गरम कर नहीं। एवं आम को गोटे गोटे कर पकई ना। ऑलरेडी तेल गरम हो सारी। फ्रेंड्स कर छाणी ना।
कदली गुड़िक अतिरिक्त सीझे देले से पानी रही जाए, तेणु अत्यधिक सीझेबे नहीं। गोटे सीटी एनफ या गोटे सीटी किसी दुईटा सीटी किसी आवश्यकता नहीं, गोटे सीटी आम मसला बाटी देले एबे आम आपको बाहर कर नबा। एबे एई तेल रे ही आमे गोटे चक्की नहीं किसी साजीरा दुईटा गोलमरीच दुईटा लवंग दुईटा तेजपत्र दालचीनी
मसला कषि आसला तेल उपरକୁ आसलानी एबे आम आधे मगजर पेस्ट पकेबा मसला जमी स्मेल न रहे स्मेल गला पर कषि मगज ऐड करेंगे जी दरकार से जेहेतु आम ग्रेवी करवा 4-5 चामच ऐड करवा कषि नवा मसला कषि आसला तेल उपरକୁ आसलानी एबे आम आधे मगजर पेस्ट पकेबा